I'm fine. Myself Phobik Roy from the mathematicsicon channel, your mathematics teacher. So in this lecture, just we are going to solve the different questions from the increasing and decreasing functions. So I think in the last lecture, so we had solved various questions from increasing and decreasing function. Very simple chapter, and at least one question is to come from this chapter every year. Okay, so I think as a student and as a 12th candidate, you should solve this type of questions and this type of chapters very well, so that you can get the common questions from these chapters as well. Okay, so those questions are actually just are solved till now. That are all the important questions from the board exams. Okay, so I have collected from the various books, NCERT, RDsharma, Agrawal, and the previous year's question also. Okay, so after completing all the chapters and all the total syllabus, the whole syllabus, we will solve the various questions, various previous year questions for the different boards. Okay, so let me complete the whole syllabus first, and after that the all chapters will be done, and the previous year's questions will be solved, and the sample papers will be solved. That means I will make you sure that no questions will be uncommon in your board exams as well. Okay, so and the suggestion will also be given, which will be very much fruitful and useful for you as well. So just write the first question: find the interval. Find the interval fx equals to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20. Point number 1, increasing, and point number 2, decreasing. That means for both the cases you need to find the interval. Interval means for what? The values of x. It means values of x पूरा इंटरवल में जो इंटरवल में बिलोंग करता है उस इंटरवल को आपको निकालना है फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पार्ट. तो गिवन fx equals to 2x cube plus 9x square plus 12x plus 20. So as I told you, if you want to find the interval, then at first you need to find the first order differentiation. That means 6x square plus 18x plus 12. Okay, so 6 common, x square plus 3x plus 2. So f dash x. So for increasing f dash x greater than 0. Okay, this is the condition actually, and I think we had discussed this first order differentiation part. Okay, so f dash x greater than 0, that means 6x square plus thrice x plus 2 greater than 0. So x square plus thrice x plus 2 greater than 0. Now if you use the middle term factorization, that means x square plus twice x plus x plus 2 greater than 0. That means x plus 2 and x plus 1 greater than 0. So here you have the two factors. First factor is x plus 1 and another factor is x plus 2. Okay, so that means there are two values of x. First one is x equals to minus 2, second one is x equals to minus 1. So now if you draw the flow chart here, minus 1 and minus 2. So at first we need to choose less than minus 1 case. Now you have to consider any values which is less than minus 1. That means if less than minus 1 means minus 2. Less than minus 1 means minus 2. Less than minus 1 value should be chosen first, and the less than minus 1 value is minus 2. So minus 2 plus 2. So यहाँ पर minus 2 पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर so here the values of x are minus 1 and minus 2. Now it's time to draw the flow chart. Here the minus 2 and the minus 1. Now you need to choose less than minus 2 value, greater than minus 2 value. Less than minus 2 value means you can choose x equals to minus 3. Minus 3 plus 2, that means minus 1. Minus 3 plus 1, that means minus. That means both the minus.
So if you multiply two negative numbers, then ultimate answer will be positive, and that should be satisfied because the zero greater than 0 case should be chosen. So here x less than minus 2 can be chosen. X less than minus 2. Okay. X less than minus 2. Now x greater than minus 2. X greater than minus 2. You can choose. X greater than minus 2 means what? Minus 1.5. Because minus 1, you can't choose this minus 1 and you can't exceed this minus 1 here. Okay. Just to whatever the values will be chosen for this less than minus 2, that should be lie. Between minus 1 and minus 2. Okay. So minus 1.5. तो minus 1.5 ये पॉजिटिव आएगा, minus 1.5 ये नेगेटिव आएगा. That means ये चूज नहीं कर पाएंगे हम लोग. So minus 1 से छोटा. So that means this area is common. minus 2 से greater, minus 2 से छोटा, बात तो एक ही है. तो minus 2 से greater वैल्यू चूज करेंगे. 0 plus 2, 0 plus 1 greater than 0. That means x greater than minus 1 is satisfied. Okay. So x less than minus 2, that means x belongs to minus 2 से छोटा, that means minus 2 comma minus this, like that. And for the second one, x greater than minus 1, that means minus 1 से ऊपर की तरफ जा रहा है, that means plus infinity की तरफ. So the interval, the required interval is minus infinity comma minus 2 union minus 1 comma infinity. That is the required interval. Okay. Okay. Now the second question, fx equals to x plus 1 whole cube, x plus 1 whole cube and x minus 3 whole cube. Fx equals to x plus 1 whole cube and x minus 3 whole cube. Okay. Now at first we need to find f dash x equals to u into v formation can be used. X plus 1 whole cube ddx of x minus 3 whole cube plus x minus 3 whole cube ddx of x plus 1 whole cube. Okay. Now f dash x equals to x plus 1 whole cube 3x minus 3 whole square. Okay. And then ddx of x minus 3, I think it will be 1. So no need to write this thing. X minus 3 whole cube and 3x plus 1 whole square. ddx of x plus 1 is 1. So f dash x equals to 3x plus 1 whole cube x minus 3 whole square plus 3 x minus 3 whole cube and x plus 1 whole square. So for increasing f dash x greater than 0, that means this part is greater than 0. So write this line, 3x plus 1 whole cube x minus 3 whole square 3x minus 3 whole cube x plus 1 whole square greater than 0. So I think there will be common. Okay. 3x plus 1 whole square x minus 3 whole square, and in the bracket I think x plus 1 and here x minus 3 greater than 0. Right. So 3x plus 1 whole square x minus 3 whole square, and here I think twice x minus 2 greater than 0. So 3x plus 1 whole square x minus 3 and this 2 common x minus 1 greater than 0. So ultimately 6x plus 1 whole square into x minus 1 x minus 3 greater than 0. तो 6 को यहाँ पर omit कर दो. No need to use this 6 here. X minus 3 greater than 0. Okay. And I think this is square. Okay. Now here x plus 1 whole square, it is obviously greater than 0, because if in any number, okay, the square power is there, then whatever the value of x will be chosen, the ultimate answer will be what? Positive, because the square is there. Okay. So that means
दिस ग्रेटर देन जीरो केस, दैट मींस ये स्क्वायर वाला जो टर्म है वो ऑब्वियसली ग्रेटर देन जीरो होगा, नो नीड टू चेक दिस थिंग्स है। यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, एनी, यहाँ पर x का कुछ भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हो, है, एनी नंबर, ओके। बट कौन सा नंबर यहाँ पर चूज नहीं कर सकते हो, बट x नॉट इक्वल्स टू -1, x का वैल्यू -1 चूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर यहाँ पर -1 चूज कर दोगे, -1 + 1 0, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 0 के साथ इक्वल नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड केस x -3 होल स्क्वायर, ये भी ग्रेटर देन 0 ही होगा अल्टीमेट आंसर। x बिलोंग्स टू रियल नंबर तो है ही, बट एक को छोड़ के कौन सा है, x नॉट इक्वल टू कौन सा, 3 के साथ इक्वल नहीं कर पाओगे। अगर 3 x का वैल्यू 3 पुट कर दोगे, 3 - 3 0 हो गया, तो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, लेस इक्वल्स टू 0 नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गया। फिर उसके बाद x -1, लास्ट वाला जो पार्ट है कौन सा है, x -1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो x -1 दैट मींस x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर, ठीक है, 1 से ग्रेटर होना चाहिए। तो सो द इंटरवल इज, अल्टीमेट आंसर लिखो, सो द इंटरवल इज, तीनों को कंबाइन करना है कि नहीं, कौन सा मिला देखो। सो तो पहला वाला क्या मिला, x बिलोंग्स टू r बट x नॉट इक्वल्स टू -1, सेकेंड भी x बट x नॉट इक्वल्स टू 3, थर्ड वाला x ग्रेटर देन 1, दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू 1 to infinity। अब तीनों का कॉमन लो, ये जो माइनस वाला केस है ये तो इस इंटरवल में तो आता ही नहीं है, 1 से इंफिनिटी, दैट मींस ऑल द पॉजिटिव वैल्यूज। अब तीनों को कॉमन लेंगे तो देखते छोटा वाला पार्ट ही तो कॉमन आएगा ना, तो ये तीनों में से छोटा वाला कौन सा है, ये। अब इसके अंदर -1 तो है, ऐसे भी है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी एक्सेप्टेड। x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता है, सो दैट मींस देखो 1 to इंफिनिटी में 3 तो है ना, सो इंटरवल इज x बिलोंग्स टू, ये क्लोज नहीं होगा, ओपन ही होगा ये, सो दैट मींस 1 to इंफिनिटी, बट कौन सा, -3, तो ये होगा आपका इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, ओके। फॉर डिक्रीजिंग 6x + 1 होल स्क्वायर, x -1 और x -3 होल स्क्वायर लेस देन 0, ओके, लेस देन 0। अब लेस देन 0 होने से ये x + 1 होल स्क्वायर ये तो कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। x -3 होल स्क्वायर ये भी ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0 है, दैट मींस ये दोनों का वैल्यू ऑल टाइम पॉजिटिव ही निकलेगा। सो अगर यहां पर पूरा आंसर, अल्टीमेट आंसर अगर लेस देन 0 आना चाहिए, सो दैट मींस ये वाला वैल्यू ग्रेटर लेस देन 0 होना चाहिए, दैट मींस ये नेगेटिव, सो x -1 लेस देन 0, ये लेस देन 0 होना चाहिए, दैट मींस ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो अल्टीमेट आंसर तो नेगेटिव आना चाहिए ना, तो दैट मींस बाकी रह गया एक फैक्टर, तो ये लेस देन 0 होगा, ये नेगेटिव होने से ही पूरा आंसर जो है नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दैट मींस x लेस देन 1, ये 1 से छोटा की तरफ जाएगा, 1 से छोटा। सो यहां पर कितना, यहां पर भी सेम, यहां पर भी वही केस, x नॉट इक्वल्स टू -1 और यहां पर x नॉट इक्वल्स टू 3। सो तीनों को कॉमन लेंगे तो इंटरवल क्या आएगा, इंटरवल देखो क्या आएगा, देखो 1 से छोटा, दैट मींस -∞ to 1, तो इंफिनिटी से 1 से छोटा 3 तो ऐसे भी नहीं आ रहा है, ये तो ऑलरेडी बाहर ही है, जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर देखो एक -1 है। अब 1 से नीचे की तरफ जाओगे तो -1 तो एक रहेगा, बट -1 तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट -1 कैन नॉट बी चूजन, सो एक काम करो, ये पूरा इंटरवल से -1 को एक्सक्लूड कर दो एंड दैट विल बी द रिक्वायर्ड इंटरवल फॉर द डिक्रीजिंग फंक्शन, ओके, ठीक है।
फिर find the interval for which next question, find the interval for fx equals to log 1 plus x minus twice x by 2 plus x. Point number 1, increasing, or point number 2, decreasing. तो आओ, given fx equals to given fx equals to log 1 plus x minus twice x by 2 plus x. So f dash x 1 by 1 plus x, log x का डिफरेंशिएशन माइनस ये तो u by v होगा, so it means 2 plus x whole square. Okay, 2 plus x whole square 2 plus x ddx of twice x minus twice x ddx of 2 plus x. So f dash x equals to 1 by 1 plus x minus 2 plus x whole square. Okay, और यहां पर क्या होगा, 2 plus x और ddx of twice x means 2 minus twice x, इसका भी आंसर 1. So that means f dash x equals to 1 by 1 plus x minus 4 plus twice x minus twice x by 2 plus x whole square. twice x cancel. So एक काम करते हैं, उसको LCM कर लेते हैं. 1 plus x 2 plus x whole square. तो यहां पर देखो 2 plus x whole square minus 4. 2 plus x whole square minus 4 x plus 1. ये शायद हम लोगों ने किया है कि नहीं? ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया है. So f dash x equals to 4 plus 4x plus x square minus 4x minus 4 by 1 plus x 2 plus x whole square. तो यहाँ पर 4 cancel. So f dash x equals to x by 2 plus x whole square 1 by x plus 1. ये है ultimate f dash x. So for increasing f dash x greater than 0. f dash x greater than 0. So that means यहां पर x by 2 plus x whole square 1 by x plus 1 greater than 0. So this square term, obviously the value of any square term will be greater than 0. So no need to verify these things. You already know this thing, no? So x by 2 plus x whole square greater than 0, but x not equals to 0. x 0 के साथ इक्वल नहीं होगा. 0 के अलावा यहां पर एनी वैल्यू चूज कर सकते हो. x बिलोंग्स टू r, कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हो. स्क्वायर है ना, अल्टीमेटली पॉजिटिव में ही कन्वर्ट होगा. बट 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 0 पुट कर दोगे, देखो ऊपर 0 बाय समथिंग, आंसर तो 0 आ रहा है. 0 से ग्रेटर आना चाहिए, आंसर 0 आने से नहीं चलेगा. सो नेक्स्ट पार्ट, x plus 1 greater than 0. So x plus 1 greater than 0 है कि नहीं? So x greater than minus 1. So interval x belongs to minus 1 से एकदम इंफिनिटी तक जाएगा, बट एक्सेप्ट किसको छोड़ के? 0 को छोड़ के. ठीक है, 0 को छोड़ के, दैट इज द इंटरवल.
ठीक है, दैट मीन्स द वैल्यूज ऑफ x कैन बी चूजन from minus 1 to infinity, but except 0. If you put 0 here, then I think this expression, this square expression will be equals to 0, but this equal 0 can't be chosen here. Okay, now next fx equals to, next ये क्वेश्चन शायद हम लोगों ने किया है पहले, ठीक है, ठीक है, फिर से यहाँ पर हो गया रिपीट, अब क्या करें है? तो 4 fx equals to x cube plus 1 by x cube. Okay, same you need to find, and here obviously x not equals to 0 होगा. Now find the interval, find the interval, find the interval, interval निकालना है आपको for increasing and decreasing both. So fx equals to x cube plus 1 by x cube. So according to the algorithm, you need to find the f dash x first. So 3x square by plus minus 3 x to the power minus 3 minus 1. So that means f dash x equals to 3x square, and this minus 3 1 by x to the power 4. Okay, so 3 common, x square minus 1 by x to the power 4, f dash x. Okay, for increasing, देखते हैं क्या होता है. f dash x greater than 0 आना चाहिए, है कि नहीं? So that means 3x square minus 1 by this greater than 0. Okay, so x square minus 1 by x to the power 4 greater than 0. Okay, now easy. So x square greater than 1 by x to the power 4. डायगोनल मल्टीप्लाई करेंगे तो x to the power 6 greater than 1. That means x greater than 1. So x belongs to 1 to infinity, but except कौन सा 0. x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है. ये 1 to infinity 0 तो ऐसे भी नहीं आता इसमें, ठीक है. ओके, for decreasing f dash x less than 0. That means 3x square minus 1 by x to the power 4 less than 0. So x square minus 1 by x to the power 4 less than 0. That means x square less than 1 by x to the power 4. ठीक है? So x to the power 6 less than 1. That means x less than 1. X less than 1. So that means minus x belongs to minus infinity to 1. But except, so interval is minus infinity to 1, but except 0. 0 चूज नहीं कर सकते, जबकि माइनस इन्फिनिटी टू 1 इसमें 0 आ जाता है. 0 तो चूज नहीं कर पाओगे. अगर 0 चूज करते तो पूरा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा. दैट मीन्स फॉर द डिक्रीजिंग एंड फॉर द इंक्रीजिंग फंक्शन द इंटरवल्स आर
like this. Okay, then next, find the interval for which find the interval for which fx equals to x cube minus 12x square plus 36x plus 17 is increasing and decreasing. Okay, so given fx equals to, तो सेम टाइप क्वेश्चन ही है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं है, माइनस 12x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 17. नाउ एट फर्स्ट जस्ट फाइंड f dash x. 3x square minus 24x plus 36. That means 3 common, x square minus 8x plus 12. Now if you factorize this thing, minus 6x minus twice x plus 2. Okay, so 3 x minus 6 x minus 2. So f dash x will be like that. So for increasing f dash x greater than 0. That means 3. For increasing x minus 6 x minus 2 greater than 0. So this implies x minus 6 x minus 2 greater than 0. Okay, now here are the two factors. X equals to 6 and x equals to 2 are the zeros. So that means x equals to 2 एक है, x equals to 6 एक है कि नहीं? ठीक है, तो यहां पर 2 और यहां पर 6 लो. अब 2 से छोटा 2 से ग्रेटर 3 ले सकते हो. 2 से छोटा 1 लो. 1 minus this negative, 1 minus this negative. That means negative negative positive greater than 0 satisfy हो रहा है. That means 2 से नीचे हम लोग चूज कर पाएंगे. अब 2 से ग्रेटर 3 minus 6 3 minus 2 है. 3 minus 6 नेगेटिव आ रहा है, 3 minus 2 पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं? अब 2 और 6 के बीच दैट मीन्स दूसरा कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हैं. 4 minus 6 नेगेटिव, 4 minus 2 पॉजिटिव. दैट मीन्स 2 से ग्रेटर ये तो पॉजिटिव आएगा और 2 से स्मॉलर ये ऑल टाइम नेगेटिव आएगा. दैट मीन्स यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है. ग्रेटर देन 0 आना चाहिए बट नेगेटिव आ रहा है. दैट मीन्स वी कांट चूज. अब 6 से ऊपर चूज कर लो. 6 से छोटा तो एक ही बात है ना, इस इंटरवल में आता है. 6 के ऊपर तो ऑब्वियसली दोनों पॉजिटिव ही आएगा. तो यहां से x का दो वैल्यू मिलता है. एक है x less than 2 and x greater than 6. So that means x belongs to less than 2 minus infinity comma 2 union 6 to infinity. So that is the interval for the increasing part. And for decreasing, just write this thing. For decreasing ये लेस देन 0 होगा, ये लेस देन होगा. अब दैट मीन्स 2 से छोटा और 6 से ग्रेटर के लिए इंक्रीजिंग था, तो डिक्रीजिंग किसके लिए होगा? 2 से ग्रेटर और 6 से छोटा, बस हो गया. तो दैट मीन्स इंटरवल यहां पर, दैट मीन्स इस इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, बाकी सब में तो इंक्रीजिंग है ना. सो दैट मीन्स x यहां पर सो इंटरवल क्या आएगा? 2 से ग्रेटर और 6 से छोटा, उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,6. ठीक है, तो डिक्रीजिंग के लिए ये इंटरवल होगा 2 to 6. दैट मीन्स 2 और 6 के बीच जो नंबर्स होगा वो सब आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, हो गया. फिर नेक्स्ट,
next. Prove that log cos x is strictly increasing on minus pi by 2 comma 0 interval, okay, and strictly decreasing on 0 comma pi by 2 interval. So here fx equals to log cos x, ठीक है. अच्छा, तो f डैश x क्या आएगा, 1 बाई cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, दैट मीन्स माइनस 10x, ओके, माइनस 10x, ये f डैश x का है. सो नाउ फॉर इंक्रीजिंग, अच्छा एक काम कर सकते हो, हियर माइनस पाई बाई 2 लेस देन x लेस देन 0, ये इंटरवल दिया हुआ है ना, ठीक है. अच्छा, x का वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 में जाएगा. सो इस इंटरवल में, इन दिस इंटरवल, ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल में 10x क्या आएगा, निगेटिव एंगल है ना, तो निगेटिव एंगल दैट मीन्स माइनस 45 डिग्री, माइनस 60 डिग्री, माइनस 90 डिग्री, ऐसा कुछ. दैट मीन्स 10 माइनस 60 डिग्री अगर ले, माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस 10 60, तो दैट मीन्स निगेटिव वैल्यू आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है ना. सो दैट मीन्स इस निगेटिव एंगल में ये जो इंटरवल है, इसमें 10x का वैल्यू लेस देन 0 आएगा. बट यहां पर f डैश x जो है वो क्या है, माइनस 10x है. तो अगर मैं बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई करूं तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा. दैट मीन्स ये क्या है, ये f डैश x है, f डैश x ग्रेटर देन 0. तो f डैश x ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब fx इंक्रीजिंग होता है. सो fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, समझ में आएगा. दैट मीन्स यहां पर एक इंटरवल दिया गया है, क्वेश्चन में बोला गया कि प्रूव दैट इस इंटरवल में fx जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा. तो ये इंटरवल है, निगेटिव एंगल्स का इंटरवल है. अब हम लोग जानते हैं 10 फंक्शन में कोई भी निगेटिव एंगल्स अगर पुट करें, वो निगेटिव साइन बाहर आ जाता है. तो 10x का वैल्यू यहां पर है, एग्जांपल भी हम लोगों ने देखा है. 10x का वैल्यू जो है, x की जगह मैंने क्या पुट किया, माइनस 60 डिग्री, क्योंकि देखो माइनस 90 टू 0, तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो अल्टीमेट आंसर लेस देन 0 आ रहा है. तो 10x का वैल्यू लेस देन 0 आ रहा है. तो यहां पर तो f डैश x क्या था, माइनस 10x था, बोथ साइड माइनस मल्टीप्लाई किया है. तो मैंने बोला था कि माइनस मल्टीप्लाई करने से रिवर्स हो जाता है. तो देखो ग्रेटर देन 0 हो गया. तो माइनस 10x मतलब क्या है, f डैश x ग्रेटर देन 0. तो f डैश x ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब इंक्रीजिंग होता है. वही तो स्टेटमेंट लिखा है. सो fx इज इंक्रीजिंग ऑन माइनस पाई बाई 2 कोमा 0, ठीक है. फिर अगेन फॉर x, ये मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केस. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, ये हम लोग जानते हैं. 10x ग्रेटर देन 0, 10x हो, sin x हो, sec x हो, कुछ भी हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. 0 टू पाई बाई 2, 0 से लेकर 90 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू 0 होता है, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो ग्रेटर देन 0 होता है ऑब्वियसली. अब माइनस साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा. तो माइनस 10x मतलब क्या है, f डैश x का वैल्यू निकला था शायद, सो लेस देन 0. तो f डैश x लेस देन 0 कब होता है, सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 comma पाई बाई 2. हो गया, ठीक है. फिर प्रूव दैट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ. Prove that f theta equals to 4 sin theta by
2 plus cos theta minus theta is increasing function is increasing on close interval 0, pi by 2. So यहाँ पर f theta 4 sin theta by 2 plus cos theta minus theta. So according to the algorithm f dash theta, first order differentiation needs to be found. So ये होगा u by v, it means 2 plus cos theta whole square. फिर 2 plus cos theta dd theta of 4 sin theta minus 4 sin theta dd theta of 2 plus cos theta है कि नहीं, और इधर तो -1 है कि नहीं. सो 2 plus cos theta dd theta of 4, that means 4 cos theta minus 4 sin theta dd 0 or dd x of dd not dd x dd theta. dd theta of cos theta means minus sin theta whole by 2 plus cos theta whole square minus 1. So f dash theta इसमें 4 cos theta sorry 8 cos theta plus 4 cos square theta मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये माइनस माइनस प्लस 4 sin square theta whole by 2 plus cos theta whole square. तो f dash theta equals to 8 cos theta और इधर 4 कॉमन लेंगे cos square theta plus sin square theta by 2 plus cos theta whole square. ठीक है. सो f dash theta क्या आ रहा है 8 cos theta plus 4 by 2 plus cos theta whole square. ठीक है. तो यहां से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं 2 cos theta plus 1 by 2 plus cos theta whole square. ठीक है. अब इंटरवल क्या दिया हुआ है, इंटरवल क्या दिया हुआ हियर 0 लेस इक्वल्स टू थीटा लेस इक्वल्स टू पाई बाई 2. थीटा का वैल्यू 0 से लेके पाई बाई 2 तक आप चूज कर सकते हैं. अब इस इंटरवल में ये जो इंटरवल है cos थीटा का वैल्यू यहां पर पॉजिटिव होगा, दैट मींस 2 प्लस cos थीटा ये पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो 2 प्लस cos थीटा भी पॉजिटिव ही होगा. तो दैट मींस 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा. ऐसे ऊपर स्क्वायर है पॉजिटिव तो आना ही है. अगेन 2 cos थीटा पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है कि नहीं. तो दैट मींस 2 cos थीटा भी होगा. तो दैट मींस 2 cos थीटा प्लस 1 ये भी ग्रेटर देन 0 होगा. सो दैट मींस एफ डैश थीटा में जो जो एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हैं सब एक्सप्रेशंस का वैल्यू ग्रेटर देन 0 निकल रहा है. तो दैट मींस एफ डैश थीटा का वैल्यू क्या लेस देन 0 आएगा या फिर ग्रेटर देन 0 आएगा. ये एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0, नीचे वाला एक्सप्रेशन भी ग्रेटर देन 0. तो एफ डैश थीटा द होल आंसर विल बी क्या ग्रेटर देन 0 आएगा. सो एफ थीटा इज स्ट्रिक्टली क्वेश्चन क्या था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0, पाई बाई 2 इंटरवल. ठीक है. हाँ अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर यहाँ पर ग्रेटर इक्वल्स टू क्यों नहीं दिया आपने. अब इक्वल्स टू यहाँ पर होगा कभी भी, देखो तो 0 के साथ इक्वल होगा कभी. यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव ही निकलेगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है. ठीक है ना. तो यहाँ पर प्लस 2 है ना, तो इक्वल 0 कहां से होगा, तो इक्वल साइन तो होगा नहीं. तो यहां पर भी देखो यहां पर ये cos थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ सकता है.
ग्रेटर इक्वल टू 0 भी आ सकता है, यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल टू 0 आ सकता है, क्योंकि थीटा का वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पाई बाई 2 पुट कर दूं, ठीक है, क्योंकि लेस इक्वल टू है ना पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 भी पुट कर दो, cos पाई बाई 2 0 के साथ इक्वल हो सकता है, 2 cos थीटा का आंसर भी 0 के साथ इक्वल हो सकता है। बट 2 cos थीटा प्लस 1, अगर प्लस 1 आपने कर दिया तो 0 के साथ कैसे इक्वल होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा ऑब्वियसली। ओके, सो ये 0 भी हो जाए, 0 प्लस 1 हो गया ना, 0 के साथ इक्वल नहीं है, 0 से ग्रेटर आ रहा है, तो इसलिए ग्रेटर देन साइन हो गया। तो ये सब चीज जो इनइक्वालिटी का जो ये जो है ना, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, दिस शुड बी actually this should be learned with proper attention, and it is actually this concepts related the inequalities, this absolute values, the modulus, and this greatest integer function. These are all the basic, the foundation of this mathematics subject as well. Okay, so if you have this clear concept regarding this properties, regarding these topics, regarding this mathematical operator, then I think in the various field you will be very much confident whenever just while you are solving the different questions. Okay, so it is proved, you can see. This means all the questions from increasing and decreasing functions are solved, no actually questions are left. Okay, so I think increasing decreasing function is completed, and just only one type question used to be there, and there is find the interval, find the interval, find the interval. Different types of functions are there, and I think in the last course, in the last lecture, different modulus and different functions used to be taken, and I think the interval was already found. Here in this lecture, the same thing is happening for the different functions. Just we used to choose the functions as well according to the question, whatever will be given, just like that. Okay, just you need to find the interval for the different pattern of functions. Okay, but the ultimate structure, ultimate procedure will be same. So increasing decreasing function is completed from NCERT, RD, whatever the book it is. Just all the types and all the questions were solved. Just you need to solve this type of questions. Okay, and just you have to collect different questions from the different books, and now you need to solve, you need to practice it very religiously. Okay, so thank you very much for joining my class. And मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. इन द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट वी विल स्टार्ट द मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट एंड लिटिल बिट टफ आल्सो. ओके, सो ये चैप्टर लेंथी भी है, सबसे बड़ा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, सबसे बड़ा सब चैप्टर है. ओके, इसमें से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है. ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट सब चैप्टर दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा चैप्टर. ओके, सो from the next class we will start this maxima and minima chapter. Okay, and we will continue for 3 and 5 and 6 lectures as well. Okay, so thank you very much, and if you like my videos, if you like my lectures, then subscribe, like and share my channel. Bye and